Very good evening, everyone, and welcome to yet another interesting session on Journal Aptitude Day 10. And today we will be discussing the tips and tricks to solve the sequential ordering questions. Very good evening, Sanchari and Tej. Welcome to today's session. Very good evening, Devanshi. Good evening, Shubhra. Good evening, Romy. Guys, quickly tell me if the screen is visible and my voice is audible or not. Quickly type Y if it is visible and audible. Very good evening, Pallavi. Okay, great. So, guys, are you ready for this wonderful, interesting, and I will say the most easiest part of the journal aptitude session, or rather, the logical reasoning session? So, you guys are ready for it? Shall we start? Yes? Fatafat, yes, Liko, if you guys are ready for this session to start. Come on. Okay, so moving on with this session. So, in this particular session, we will be discussing about the sequence based questions, as I said. Okay, and it's basically from the logical reasoning part, and this is one of the most scoring question type in the the reasoning system, reasoning section, if I say one of the most scoring. Okay, you can score if you know the tips to solve these kind of questions. Okay, so any question comes in your CSIR net exam or any exam related to the sequence based questions, I'm sure after this class you will be able to solve each and every question without hesitating. Okay, so now in sequential ordering there are basically two kinds of questions. Okay, one I can tell you which will be based on numeric, that is numeric based. Okay, another one will be based on alphabet, that is alphabet based. Okay, so the sequential ordering is divided into two parts, that is numeric based questions and alphabetic based questions, right? So now the numeric based questions will contain a set of numbers. The numeric based questions will contain a set of numbers and some operations which are need to be performed on them. Okay, operations as in uh, ascending order, descending order, positive, negative, anything can be done. Okay, so those are numeric based questions. Okay, and some questions will be like in the alphabetical base, so those questions will contain a set of words and some operations which needs to be performed on them. Okay, so that is the difference between the two type of questions which comes under the sequential ordering, that is numeric based and alphabetical based. Okay, now in order to solve these kind of questions, first of all you have to be very attentive when you are reading the question. Okay, so first comes is attentiveness. You have to be very attentive in the sense when you are reading the question related to the sequential ordering, you have to catch the keywords, the terms. Okay, a quick understanding of the terms, because it's all about the terms. In sequential ordering questions, everything is related to the terms used in the question. Okay, so understanding the terms, and the terms can be right, left, middle, ascending order, descending order. Okay, and there are many more terms. These are some common terms which you have to keep in your mind when you're trying to solve a sequential ordering questions.
Okay, so sometimes what happens, if in a question these terms are used, you can directly relate the options with the question and you can get the answer. You don't have to read the whole question if it's a long question and then find out the answer. No, you can just check the terms, which terms are used, whether it's saying, move towards right or left, or the letter is placed in the middle, or whether the numbers are in ascending order or a descending order. Okay, so now let's check a question based on this. Okay, let's try to solve a question based on this. Okay, so here the question says, how many odd numbers are there in the given series? So my first keyword is odd numbers in the given series which are immediately preceded and immediately followed by an even number. That means my keywords are, first one is odd number. This is my first keyword. My second keyword or my second term is preceded. That is my second important term. And my third important term is followed. Okay. So here preceded means I have to find out the odd number in this particular series. This is my given series. Okay. So this is my given series. I have to find out how many odd numbers are there which are preceded. Preceded means if suppose my number is 4, I have to find the number before it and after it. That means preceded and followed. Okay. So I have to find out how many odd numbers are there in this particular series which are preceded by even number and also followed by an even number. Okay, so if I check this question, so here 5 is an odd number for me, but before it nothing comes, so I'll just leave it. 7 is an odd number for me, but before this I have an even number, but after that it's an odd number, so this is also cannot be taken. Now if I see 9, the number 9, so before the number 9, 3 is there, but after the number 9, 8 is there. That means this also doesn't satisfy the condition. Okay. The next odd number, if I take the number 5, so before 5, we have 8. That means my first condition is satisfied, that is preceded. But the second condition, that is 7. So this is not an even number. So this is not satisfied. Okay. Now if I take the number 3, so 3 is an odd number. So 3 is preceded by 6 and immediately followed by 1. That means it satisfies the condition. Okay. Next again, if I take the number, let's say 3 again, it's an odd number. So 6 and 8, that means both are even number. That means the condition is satisfied. So these two conditions are satisfied. Okay. Now if I again take the number 5, which is an odd number. Okay. So 8 and 2, that means both are even number. So this is the third stage where the condition is satisfied. And again, if the number 3, which is odd number, so 4 and 4, so this is again satisfied. That means we have altogether 4 odd numbers, or 4 times in this particular series we have odd numbers which are preceded and followed by a even number. Okay, got it? Yeah. So Romy, Anupam, Shubhra, you guys were correct. So the correct answer is option number D, that is 4. Okay, right? Now if I move on to the next question, but before that, the first one, if I take the condition first one, 1 is not an even number, so it is not satisfied. Okay, so we have to check on with the numbers who satisfies the condition which is immediately preceded and followed by an even number. Okay, so you have to just keep on checking the numbers
and then after that you can see it. So this one is not considered. If I consider the number 9, which is an odd number, so 4 and 6, these are even, so my third term will be the last one, that is 9. So we have 3, 5, 3 and 9 as the odd numbers whose in the series who are preceded with, you know uh, an even number and followed by an even number. Okay, hope that is clear to Pallavi and Prachi. Now it is correct. Okay, so let's move on to the next question. Okay, so the next question says, if the first half of a given series is reversed. Okay, so this is the series, and it says the first half of the given series is reversed. So first of all, I have to count how many numbers are there in particular series. So it's, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 14. Okay. Now, first half of this particular series is reverse. So, reverse is my important term over here. Okay. So, if I divide these 14 numbers into half, so from 7, it should be reversed. That means now my new series would look something like this, that is 3, 5, 7, 4, 10, 2, 6, and then after that, as it is, that is 9, 8, 2, 6, 9, 9, and then 4. Okay, so this is the reversed part. Okay, now the second part of the question says, which of the following will be the third digit to the left of the third digit from the right? Okay, so it says, which of the following will be the third digit to the left of the third digit from the right? Okay, so if this is right side, this is the left side. Let's say this is L and this is R. Okay, so in previous class we already learned about, if we get in the same direction or different direction, then what we have to do, we have to add it, the positions, or subtract it, right? So here, first what we have to do is we have to find out the position of the digit. Okay, so here the position of the digit would be, since it says third digit to the left and third digit to the right, that means 3 plus 3, that is 6 digit from the right. Okay, right? So now I got the position of this particular digit, that is the sixth digit from the right. So this is the position of this particular digit which we have to find out from this particular series. Now you guys tell me, what will be the sixth digit from the right in this particular series which is reversed right now? What will be the sixth digit from the right? And if you tell me the sixth digit from the right, that would be the answer for this particular question. Okay, so this is the right side, as I said. Suppose this is the right side. So 6 digit from right, that means 4, 9, 9, 6, 2. So this is my 6 digit, right? That is the number 8. Correct? Number 8 is the 6 digit. So my answer for this particular question will be 8. Okay? Simple. You just have to calculate the position of the final digit from the, whether it's given to the left hand side, whether it's given to the right hand side, or you have to see whether it's in same direction or opposite direction, and accordingly you have to add or subtract. Okay, understood?
Any questions in this? Okay. Yes, Pallavi, in the previous question, the 3 was followed by 1 and 1 was an odd number. So that is not taken into consideration. The last one that was, uh, if I show you one sec. Okay. So the last one that is 4 and 6, this one, 496, that is taken into consideration. This one, which is a cross mark over here, that is not the correct one. Okay, because 1 is an odd number, it's not an even number. Okay, now let's move to the next question. Now, in this particular question, it says study the following sets of number and answer the question. So we have some sets of number given to us. So these are the number sets. Okay, and we have to answer the question reading the phrase which is given to us. Okay, so it says if in each number all the digit are arranged in descending order. Okay, so this is an important term for me, right? So the question is telling if in each number, if the each numbers are arranged in descending order. Okay, so here you have to see in the numbers they are talking about digit. That means if it is 384, so if I arrange 384 in descending order, what will come? 8, 4, and then 3, because descending order means from bigger to smaller number. That means bada se chota. Okay, similarly all the rest of the numbers, that is 475, 563, 728, 849 and 631, have to be arranged in descending order. And the main thing is the digit needs to be arranged, not the numbers. Okay, so if I just arrange all the numbers, then my second number would be 754. Okay, my third number would be 653, and then 872, then 984, and then the last one would be 631. Now it says which among the following correspond to the smallest number. Now in this new series which we got after arranging it in descending order, which is the smallest number over here? So obviously we can see the smallest number is 631, right? So my answer would be option number B, that is 631. Okay, understood? Any doubts in this question? Was it difficult to understand for you guys? But you have to just take the terms in consideration. Descending order hai, okay, it should be bada se chota, and then smallest number, that means sabse chota number. Okay, and then the main thing is digits को अरेंज करना है, सारे नंबर्स को अरेंज नहीं करना है. दैट मीन्स 384 और 475 में से कौन सा बड़ा है वो मुझे चेक नहीं करना है. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ in the next question it says if in each number first and last digit are interchanged. Okay, so ये सीरीज में फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज. दैट मीन्स इंटरचेंज्ड एंड फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ये मेरा इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया यहाँ पे. ठीक है, if the first and last digit are interchanged, then how many odd numbers are there after interchanging? Okay, so my important terms are first and last digit, interchange हो रहा है, and then it should be the odd numbers. Okay, so here 384 का फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर हम चेंज करेंगे तो वी विल गेट 483. सिमिलरली 574, 365, 827, 948, 1,
36. Okay. Now how many odd numbers are there? Odd numbers कैसे पता करेंगे? लास्ट का डिजिट देख लो. So 3, ये एक odd number है, ये एक odd number है, ये एक odd number है. तो मेरे पास कितना odd numbers हुआ after interchanging? 3. That means correct answer is option number D, which is 3. Okay. Good job to Prachi, Shubham, Pallavi, Romy, everyone. You guys are doing great job. So are you guys enjoying in this particular questions? Easy है, बहुत simple questions है, but at the same time अगर आप terms को catch नहीं करोगे, it will be really difficult for you to understand the question and fetch full marks in this kind of questions. Okay? चलो अब हम लोग next question देखते हैं. So in the next question, it says if 384 is written as 438, ठीक है, 384 को अगर हम 438 लिख रहे हैं, that means यहाँ पे क्या हो रहा है? Just एक नंबर शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, 384 है, 438 लिखे, that means 4 क्या हो गया? फर्स्ट पोजीशन में चला गया, 3 आ गया सेकंड पोजीशन में और 8 लास्ट में चला गया. ओके, so 384 is written as 438, 475 is written as 547 and so on, then which of the following two numbers will have least difference? ठीक है, तो ऐसा कौन सा दो नंबर्स है जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा? ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल अरेंज दिस पर्टिकुलर सीरीज. Okay, so if 384 is there, so we will write it as 438. Okay, उसके बाद 475 it is 547, then 563 can be written as 356. Okay, and then 827, 948 and 136. ओके, सो अब इसमें से मुझे फाइंड आउट करना है सबसे कम डिफरेंस कौन से दो नंबर्स का होगा. दैट मीन्स अगर ये दो नंबर ले या फिर ये दो नंबर ले और दीज टू नंबर्स, सबसे कम डिफरेंस किसका है? ठीक है, सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, इन दिस वी कैन क्लियरली सी कि अगर 438 और 547 को लेंगे, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर. ठीक है, बट इफ वी टेक 8 and 3, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है. दैट मीन्स माई आंसर वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 475 and 384 is my correct answer, क्योंकि when I change these two, that is 438 after changing from 384 and 547, that is from 475. So इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे कम डिफरेंस आ रहा है in comparison to other numbers. So the option would be 475 and 384. So the difference will be almost 109, the least difference. Okay, easy, simple. Now let's move to the next question. Now in this question, what you have to do is you have to study the alphabets. Okay, and after that you have to answer the questions. Now ये जो सीरीज है और ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसमें you have to make sure that in the same question it is giving, the word forms after performing the given operations may or may not be a meaningful English word. It is not necessary that कोई meaningful English word form हो after performing any kind of operation in the following set of alphabetical series. Okay, fine. So ये question में already दिया हुआ है आपको. Now let's move on and check questions क्या क्या है इस series पे, alphabetical series पे. So the question is, if in each of the words the first and the second letters are interchanged. Okay, so यहाँ मेरा terms, important terms क्या क्या हो गया? First letter, second letter है. ठीक है,
फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को हमें इंटरचेंज करना है. दैट मीन्स फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड needs to be interchanged, and then all the words are arranged in an alphabetical order from left to right. So ये मेरा एक सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म हो गया. So यहाँ मेरा टर्म एक इंटरचेंज था, फर्स्ट एंड सेकेंड था, एंड देन लेफ्ट टू राइट. ओके. Now if I see the series, that is, okay, so let me write it. Ram, sit. Next is pet, net, and cut. Okay, so ये मेरा alphabetical series है. Okay, now here we have to just interchange the first and second letter, right? So if I interchange the first and second letter, so पहला word क्या हो जाएगा? Okay, something like this, and okay, so ये हो गया मेरा first part of the question, that is interchanging the first and second letters. Okay, now we have to find out all of them or all the words are arranged in the alphabetical order from left to right. Okay, अब इस सारे को alphabetical orderly हमें left to right में arrange करना है. Okay, so after arranging this particular series from left to right, middle में कौन सा पड़ेगा? This one, which is EPT. Now EPT किसको correspond करेगा? It means option में से किसको जाएगा? This particular pet. So my correct answer would be PET. That means option number C is the correct answer for me. Okay, so PET, pet, is the correct answer for me, right? So good job to Romi, Diksha, Prachi for the correct answer, and Shubhra, hope you understood the correct answer would be PET, pet, for this particular question, because this EPT, when we change the first and second letter, this comes in the middle, and once it comes in the middle, we will just rectify it which one it corresponds to with the uh, options. So obviously EPT represents the option number C, that is pet. Okay, great. Chalo, so let's move on to the next question. Now this question it is telling if the first alphabet, now ye mera pehla important term hai. Okay, first alphabet in each word, har ek word mein, is changed to the previous alphabet. Okay, that means ये alphabetical series का जो पहला word है, that is R, S, N, P और C, ये सारा पहला letter है. These letters are changed to previous alphabet in the English alphabetical order. How many words does form have more than one vowel in it? Okay, so अगर इसका पहला letters हम previous alphabet में change कर दे, तो what would be my series? It will be something like this. R का पिछला हो गया Q. Okay, then RIT, then we have MET, then OET, and then C का अगर पिछला हो जाए तो ये हो जाएगा B. Okay, now it says how many words are there which have formed more than one vowel. Okay, so ये इसमें भी एक vowel है A, I भी एक vowel है, E भी एक vowel है, यहाँ भी E है, U भी है. That means पांचों का पांचों words में vowel है, right? So my correct answer would be option number A, that is 5 would be my correct answer for this particular question. Okay, very easy and very simple to understand. Fine, so let's move to the next part. So here it is telling me if the last alphabet
लास्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फाबेट. पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, फर्स्ट अल्फाबेट इज चेंज टू प्रीवियस अल्फाबेट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट अल्फाबेट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड दे आर चेंज टू नेक्स्ट अल्फाबेट. दैट मीन्स एम, टी, टी, टी और टी, ये सारा चेंज हो जा रहा है. ओके, सो नाउ ये सारा अगर चेंज हो जाएगा, सो मेरा नया जो सीरीज है वो किस तरीके का दिखेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, RAN एंड देन SIU, उसके बाद सारा में T है तो NEU हो गया, PEU, CUU. ओके, राइट. सो यहाँ इट इज टेलिंग हाउ मेनी वर्ड्स thus formed will be meaningful English words. ओके, नाउ ये जो मेरा नया अल्फाबेटिकल सीरीज बना है, इसमें वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विच वर्ड इज दी, कौन सा वर्ड इसमें ऐसा है जो एक मीनिंगफुल वर्ड है. करेक्ट. सो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स. तो यहाँ पे अगर हम देखें SIU, इसका कोई मतलब नहीं होता है इन इंग्लिश. NEU, नो मीनिंग. PEU doesn't have any meaning in English. CUU, no meaning in English. RAN, obviously ये होता है past run का. Okay, that means the correct answer to this particular question is 1. That means my option number E will be the correct answer for this particular question. ठीक है. So questions में बहुत ही difficult मीनिंगफुल वर्ड्स का मीनिंग नहीं पूछेगा. इट मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड दे देगा एंड देन यू हैव टू अरेंज इट एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सिंपल वर्ड्स होंगे, कभी एक आध बार ट्रिकी हो सकते हैं, बट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस इटसेल्फ. ओके, now let's move to the next question. So before moving, any doubts, anyone up to this? Anyone, any doubts, any difficulty? इजी था, डिफिकल्ट था, मजा नहीं आ रहा, एनीथिंग? एनीवन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, सो प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है. ओके, आई सी, आई गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है. सो यहाँ पे the question it says the first alphabet of each word is changed to the previous alphabet. Okay, and then in the English alphabetical order, how many words thus formed which has more than one vowel? एक से ज्यादा वॉवल है. ठीक है, तो कितने वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं जिनमें एक से ज्यादा वॉवल है? राइट. सो यहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसमें एक से ज्यादा वॉवल है? यू गाइस टेल मी विच वर्ड इज देयर विच हैज मोर देन वन वॉवल. जो नया सीरीज हमने फॉर्म किया आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्रीवियस अल्फाबेट्स, विच वर्ड इज देयर विच हैज मोर देन वन वॉवल? ओके, OET, राइट, OET. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये होना चाहिए आंसर, बट हमने क्या आंसर लिखा था? आंसर था 5. वाई? क्योंकि हमने क्या देखा, हर वर्ड में कितने सारे वॉवल्स आ रहे हैं. सो दैट वाज अ मिस्टेक इन रीडिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. वाई? बिकॉज इट सेज वर्ड्स फॉर्म मोर देन वन वॉवल. एक से ज्यादा वॉवल कितने वर्ड्स में है? सो यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉवल है, यहाँ भी एक ही वॉवल है, इसमें भी एक ही है, बट इस पर्टिकुलर वर्ड में दैट इज OET, इट हैज ओनली वन वॉवल. This is the only word which has more than one vowel. That means the answer for this particular question will be 1, not this one. Okay, now I hope now it is clear and correct, right? ठीक है.
Chalo, so we will move on to the next question. So here the next question it says arrange the word given below in meaningful sequence. अब यहाँ पे देखो meaningful sequence का बात हो रहा है. So ये एक particular sequence दिया हुआ है. We have to arrange it into a meaningful sequence which should match with our options which is given. Okay? So की है, डोर है, लॉक है, रूम एंड स्विच ऑन है. सो सबसे पहले क्या आना चाहिए? यू गाइस टेल मी, सबसे पहले क्या आना चाहिए इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में? ऑब्वियसली सबसे पहले की आएगा. की से किस चीज को खोलेंगे हम लोग? लॉक को खोलेंगे, तो लॉक आएगा. लॉक किस चीज का होगा? डोर का होगा, सो डोर आएगा नेक्स्ट. ओके, डोर के बाद कहाँ एंटर कर सकते हैं हम लोग? रूम में एंटर कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर द रूम वी कैन स्विच ऑन द लाइट, फैन, एसी, वॉट एवर यू वांट. ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, डोर इज 2, रूम इज 4 एंड स्विच ऑन इज 5. सो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4 5. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. राइट, इजी. नाउ ये क्वेश्चन है समथिंग बेस्ड ऑन सीक्वेंस. आपको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है इसमें से. मीनिंगफुल इन द सेंस कि जो सीक्वेंस आ रहा है, दैट मीन्स अगर ये सीक्वेंस हम लोग फाइंड आउट किए हैं, सो की के बाद लॉक आता है, लॉक के बाद डोर आता है, डोर के बाद रूम आता है. सो ये एक सीक्वेंस में जा रहा है. बट सपोज हम रूम डोर के बाद सीधे स्विच ऑन डाल देते, राइट, डोर के बाद अगर हम सीधे स्विच ऑन डाल देते देन दैट वुड बी रॉन्ग इन केस ऑफ मीनिंगफुल सीक्वेंस. बट अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी एलेक्सा टाइप का कोई होता तो ऑब्वियसली डोर के बाद हम स्विच ऑन कर सकते थे. जस्ट टेलिंग टू एलेक्सा फ्रॉम योर मोबाइल की स्विच ऑन कर दो भाई, राइट? सो दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एडवांस टेक्नोलॉजी. बट इन दिस केस मीनिंगफुल सीक्वेंसेस की, लॉक, डोर, रूम, स्विच ऑन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. The next question is arrange the given word below in meaningful sequence. So यहाँ again हमें meaningful sequence में इसे arrange करना है. So what should be the answer? You guys tell me फटाफट आंसर क्या होगा इसका? कौन सा ऑप्शन होगा? Okay, you guys are telling ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए करेक्ट आंसर. ओके, सो चलो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा. सो हियर इट सेज कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड एंड देन लास्ट वन इज ट्रीज, राइट? सो कंट्री ले लिया पहले. ओके, कंट्री के अंदर क्या होगा? फॉरेस्ट होगा. फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होगा. ट्रीज अगर होगा तो ऑब्वियसली वुड होगा. ठीक है, वुड अगर होगा तो फर्नीचर आएगा हमारे पास. ओके, सो इफ आई जस्ट अरेंज इट सीक्वेंस में, सो दिस इज नंबर 1, ये हो गया 3, दिस इज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 2. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 3 5 4 2. इजी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट? नाउ हियर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मीनिंगफुल सीक्वेंस. सो इसको फटाफट सॉल्व करो. व्हाट शुड बी द ऑप्शन, द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सो इट सेज it has post box, letter, envelope, delivery और clearance. ठीक है, सो इसको वी हैव टू अरेंज इट इन मीनिंगफुल सीक्वेंस. सो what should be the correct sequence in this? Okay, Prachi says C, Sanchari also option number A. Okay, so two different answers. ठीक है, और कोई आंसर्स apart from C and A? Okay, option A. That means two people with
Okay, now a new option, that is option number B. ठीक है. Okay, now Prachi, if you can just type the series from where you got the option C, and Sanchari and Anupam, if you can also type the option A, kaise mila, which uh, words you use to get an option number A. Just type the series. जैसे पोस्ट बॉक्स आया पहले, लेटर आया पहले, कौन सा वर्ड को आप पहले रखे. जस्ट टाइप दैट. So let's do something. Since we are getting different kind of answer, ठीक है, किसी का ऑप्शन ए है, किसी का सी है, किसी का बी है, बट द मेजोरिटी इज ए. ओके, सो लेट्स सी ए बी और सी तीनों को ले लेते हैं. इतना तो समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर डी नहीं है, बिकॉज नोबडी हैज गिवन ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. पोस्ट बॉक्स, लेटर, ठीक है. सो सपोज पहले हम ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, बिकॉज इट्स अ मेजोरिटी. सो पोस्ट बॉक्स आया पहला नंबर पे, सॉरी नंबर 2, दैट मीन्स लेटर आया पहले. ठीक है, लेटर आया, उसके बाद क्या आया, नंबर 3, दैट मीन्स एनवेलप आया उसके बाद. ठीक है, एनवेलप के बाद नंबर 1, दैट मीन्स पोस्ट बॉक्स आ गया. ठीक है, नंबर 4 में क्या आया, डिलीवरी. एंड नंबर 5 में क्या आ गया, क्लियरेंस. ओके, सो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है मुझे. ओके, बहुत लोगों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी. नाउ बी में क्या हो रहा है, पहला हो रहा है एनवेलप. ठीक है, उसके बाद आ रहा है लेटर, उसके बाद क्या आ रहा है, पोस्ट बॉक्स, उसके बाद आ रहा है डिलीवरी, एंड देन क्लियरेंस. ठीक है, ये हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में. ओके, एंड सी में क्या हो रहा है, 3, दैट मीन्स एनवेलप पहले आ रहा है, उसके बाद लेटर आ रहा है, उसके बाद पोस्ट बॉक्स आ रहा है, पोस्ट बॉक्स के बाद क्लियरेंस आ रहा है, क्लियरेंस के बाद डिलीवरी आ रहा है. ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में से व्हाट डू यू थिंक विच वन इज मोर सूटेबल एंड रेलेवेंट. सो यहां अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें, आई हैव एन एनवेलप. एनवेलप के अंदर अगर हम लेटर डालेंगे तभी हम पोस्ट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं. करेक्ट. ओके, सो एनवेलप है मेरे पास, लेटर डाले हम एनवेलप में, देन उसको हम पोस्ट बॉक्स में जाके डाले, पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद वो डिलीवरी कर रहा है, फिर क्लियरेंस दे रहा है. ओके, सो ये ऑब्वियसली नहीं हो सकता है. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज बिफोर डिलीवरी क्लियरेंस का जरूरत होता है. जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा डिलीवरी नहीं होगा पोस्ट ऑफिस से लेटर का. राइट, सो माय ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग ओवर हियर. अगर हम सी को चेक करें, ओके, सो यहाँ पे क्या है, एनवेलप है, लेटर डाल दिया एनवेलप में, उसके बाद हम उसे पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर दिए, पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करने के बाद मेरे क्लियरेंस मिल गया. दैट मीन्स अब भाई पोस्टमैन के पास क्लियरेंस है कि तुम पोस्ट को डिलीवर कर सकते हो उसका करेक्ट एड्रेस पे. राइट, दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है इस पर्टिकुलर मीनिंगफुल सीक्वेंस को. दैट मीन्स माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? नाउ देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस क्यों मिला मुझे आंसर में, बिकॉज देर वॉज अ मे बी आई कैन से क्लियरेंस और डिलीवरी, ये दोनों वर्ड में कंफ्यूजन हुआ कि क्लियरेंस पहले होगा कि लेटर का डिलीवरी पहले होगा, विच चेंज द होल सीक्वेंस. राइट, सो एकदम अटेंटिव होकर के यू हैव टू वॉच द वर्ड्स एंड जस्ट थिंक कि हाँ पहले अगर लेटर मिलेगा तो हम लेटर को एनवेलप में डालेंगे, उसको पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद इट शुड बी जहां पोस्ट ऑफिस है वहां से क्लियरेंस मिलेगा, देन ओनली द पोस्टमैन कैन डिलीवर इट टू द रिलेवेंट एड्रेस.
right? Okay, any questions in this? Difficult था, easy था, anyone? ओके, सो यहाँ पे बहुत लोगों का है कि भाई कौन से वाले सेक्शन में, ओके, लेटर और एनवेलप, यस, ये एनवेलप वाला पार्ट एंड लेटर वाला पार्ट यू गाइज आर टेलिंग कि वाई नॉट एनवेलप एंड वाई नॉट लेटर, राइट? एनवेलप का हो गया नंबर 3 एंड लेटर इज नंबर 2, ओके, एंड after that the post box is number 1, okay, and then it comes to the clearance that is number 5, and then लास्ट वाला हो जाता है क्लियरेंस और डिलीवरी, ठीक है? सो यहाँ ऑप्शन में कहीं पे भी दिख रहा है which is matching to this particular thing, let me just remove everything, okay, so that it makes clear. ऑप्शन में कहीं पे भी दिख रहा है कि you have to go by the option. अगर हम सी को करेक्ट ऑप्शन बोल रहे हैं, सो 3 स्टैंड्स फॉर एनवेलप, ठीक है, उसके बाद 2 स्टैंड्स फॉर लेटर, ठीक है, उसके बाद 1 स्टैंड्स फॉर पोस्ट बॉक्स, ठीक है, तो ये 3 2 1 कर दिया, एंड देन क्लियरेंस मिलेगा, दैट मीन्स 5, एंड देन डिलीवरी, दैट मीन्स 4, ठीक है? अगर हम लेटर को पहले रखते हैं, ओके, सो दैट मीन्स लेटर इज नंबर 2, उसके बाद हम एनवेलप में उसको डाल रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नंबर 3, फिर हम उसको पोस्ट बॉक्स में डाल रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स नंबर 1, उसके बाद हम उसको डिलीवरी कर रहे हैं, दैट मीन्स नंबर 4, और फिर क्लियरेंस ले रहे हैं, दैट मीन्स नंबर 5. डिलीवरी के बाद क्लियरेंस का कोई सेंस नहीं बनता है, करेक्ट? डिलीवरी के बाद देयर इज नो पॉइंट ऑफ taking a clearance. Before delivery you have to get the clearance. That is why letter envelope के पहले नहीं आ सकता है, ओके? आइडियली हम लोग अगर रियल लाइफ में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली पहले लेटर लिखेंगे, पहले एनवेलप चाहिए देन लेटर लिखेंगे, उस तरीके से होना चाहिए, राइट? बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर रिक्वायरमेंट, द फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज नॉट मैचिंग, क्योंकि वहां पहले ही क्लियरेंस ले रहा है, उसके बाद डिलीवरी पहले फिर क्लियरेंस बाद में, सो दैट इज नॉट मैचिंग, ग्रेट, ओके प्रकाश, होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. So let's move to the next question. So this question is for you guys. You have to solve एकदम 2 seconds के अंदर. There is a sequence of 5 consecutive even numbers which add to 60. अब ये पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऐड करने से 60 मिलेगा? फटाफट टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. You just have to watch the numbers, add it up and tell me कौन सा ऑप्शन 60 देगा. 5 consecutive even numbers. Okay, remember यहाँ पे important term है 5 consecutive even numbers that will add up to 60. Okay, okay. So दो options है, Shubhra and Romy, they say option number 2 is correct. Okay, any more? Okay, एक different है, that Anupam, he has option number 5. Okay. Any more options apart from option number 2 and option number 5? किसी का 1 3 या 4 आ रहा है? Anyone? Okay, so most of them says it's option number B. ठीक है, so option number B में check कर लेते हैं क्या हो रहा है.
So 8 plus 10 is 18, 18 plus 12 is 26, और इधर हो गया आपका 30. 26 30 कितना होता है? So if I see the option number 5, we have 5 consecutive even numbers, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है, 5 consecutive even numbers. So ये पांचों even numbers है ऑप्शन नंबर 5 में, राइट? सो अगर हम इसको ऐड करें तो यहाँ पे क्या होगा? इफ 14 plus 16 is 30, 30 18 48, 48 10 58, 58 और उसमें ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? सो व्हाट शुड बी माय करेक्ट आंसर? एकदम ध्यान से देखो कि किसमें 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है. ऑप्शन नंबर 3 विल नॉट बी द करेक्ट वन, राइट? क्योंकि उसमें ऑड नंबर है. 4 भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें भी ऑड नंबर है. 13 इज एन ऑड नंबर, राइट? सो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? माय करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. दैट मीन्स 8, 10, 12, 14, 16 will be the correct answer for this particular question, right? जैसे 5 consecutive numbers को add करेंगे, so we will get the answer or add up to 60. Okay? Now let's move to the next question. Now, quickly guys, tell me what will be the answer of this particular question. बहुत simple है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है. Just watch the question and just tell me the answer. 6 है, 3 है, 3 के बाद 3/2 हो रहा है, उसके बाद 3/4 हो रहा है. So what should be the answer? Okay, I got an answer from Romy number 2. That was quick. Good job to Romy. Anyone? Any other answer apart from option number 2? Okay, 3/8. That means option number 2. Okay, Sanchari. Okay, Anupam says Anupam says 3/5. 3/5 option में तो कहीं नहीं है. Okay. 3/5, 3/6. 3/6 is not there in the option. Okay, Shubhra says B. Prakash also says B. Yes, so the correct answer for this particular question is option number B. ठीक है? B कैसे होगा? So यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 3 हो रहा है. That means 6 is divided by 2. हाफ हो जा रहा है नंबर, राइट? 3 को फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3/2 हो जा रहा है. एंड देन 3/2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, देन इट इज 3/4. अब 3/4 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट द ऑप्शन एज 3/8. दैट मीन्स करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज 3/8. राइट? सो माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3/8. Now let's see next thing. Now here again we have to solve a meaningful sequence. Meaningful sequence questions बहुत आते हैं in the logical reasoning section में, and they are the most easiest question you can ever get, trust me. ठीक है? So here what is happening, you have to arrange the words in a meaningful sequence. अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? यू हैव टू अरेंज इट इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस. सीक्वेंस से एक मतलब आना चाहिए. सो व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फटाफट, बहुत इजी है. ओके, प्राची सेज ऑप्शन नंबर डी. एनी मोर आंसर्स अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन नंबर डी? किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है? Okay, Sanchari also option number D. So chalo D option ko we will check it out. Okay. So D says 4 comes first. That means tree come first. उसके बाद 2, that means branch. 1, that means leaves. After that 3, that means flower. And flower के बाद 5 is fruit. Right? So obviously ये एक सीक्वेंस में दिख रहा है कि ट्री होगा तो उसके ब्रांच से ही हमें लीव्स मिलेगा, करेक्ट?
and then when the leaves are out, then you'll get flower from the birds, and then you'll get the fruit. That means the correct option is option number D, that is 42135. Right? So good job to all the people who have given the right answer. That is Prachi, Sanchari, Vijay, Diksha, everyone. Good job. Now next part. ये बहुत ही important part है लॉजिकल रीजनिंग का, रैंकिंग क्वेश्चंस. ओके, बहुत ही ट्रिकी आता है ये क्वेश्चंस, बट सेम टाइम क्वेश्चंस ट्रिकी तभी होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट इन अ रॉन्ग वे. ओके, सो इफ यू वांट टू ट्राई कि हर रैंकिंग क्वेश्चंस का आंसर एकदम सही आए, कभी गलत नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना है? सो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर एनी काइंड ऑफ रैंकिंग क्वेश्चन. ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द रैंक ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का रैंक पूछा जाता है. ठीक है, बोथ फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम आर मेंशन्ड. That means in these type of questions, the rank of a person top से भी mention रहता है and from bottom, either from top or from bottom it is mentioned, and then the total number of person is to be calculated. So basically हम लोग को total number of person calculate करना रहता है. So हमारे पास यहाँ पे तीन चीज है. पहला है rank of the person from top. ठीक है, that is this one. सो इसको हम डिनोट कर सकते हैं, या तो क्वेश्चंस में अपर साइड पूछेगा या बोलेगा, या फिर टॉप साइड से पूछ सकता है. ठीक है, और इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड से भी बोल सकते हैं व्हेन इट इज इन अ रो. सपोज देयर आर स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर रो, देन उसको हम लेफ्ट साइड से डिनोट करेंगे. ओके, बट अगर एक लाइन में खड़े हैं स्टूडेंट्स, देन उसको हम टॉप साइड से डिनोट करेंगे. सो ये पर्टिकुलर rank of a person from top or from left hand हो जाएगा. Okay, so when we have to find out the total number of persons in a row or a class, कभी भी questions में it is given to find out total number of person, या तो रो में होगा या तो कोई क्लास में होगा, यही दो चीज पूछते हैं. ओके, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए what we have to do is we have to follow this particular formula. That is this one. So total number of persons in a row or class is equal to rank of a person from top or left hand plus, there is a plus sign, plus rank of that person from lower or bottom. ठीक है, या तो लोअर या फिर बॉटम बोल सकते हैं उसको, और राइट हैंड -1. ओके, सो उसको इजीली याद रखने के लिए यू कैन जस्ट use this. That means R or C, that means R stands for row, C stands for class. Question में जिस तरीके से पूछा जाए, अगर R row यूज कर रहा है तो you will be using R, अगर class यूज कर रहा है you will use C. Okay, so R और C is equal to T और L. That means अगर हम खाली row यूज कर रहे हैं तो row will be equal to suppose left plus right -1. ठीक है, और अगर क्लास बोल रहा है तो क्लास में टॉप से बॉटम, दैट मीन्स T प्लस B -1. ठीक है, ये दोनों को you have to just remember and you can easily solve any kind of ranking question, trust me. बस छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये जो चार टर्म्स है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, ये चारों टर्म्स यू हैव टू जस्ट रिमेंबर. ओके, एंड दिस -1 इज जस्ट द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला. व्हेन वी सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि व्हाई इट इज गोइंग -1. ठीक है, इट इज नथिंग लाइक वहां पे कोई लॉजिक है कि -1 क्यों कर रहा है. ओके, जस्ट टू मेक द क्वेश्चन और जस्ट टू मेक द सोल्यूशन इजियर. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यू विल बी able to understand the formula, putting the formula over there. Okay, now here it says a class of boy is standing in a single line. तो यहाँ पे क्या यूज कर रहा है? क्लास. ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लास यूज कर रहा है. सो वन बॉय इज
13th from the left hand side. Okay, so one boy is 13 from the left hand side as well as from the right hand side. मतलब लेफ्ट से भी वो 13th नंबर पे है, राइट से भी वो 13th नंबर पे है. So how many boys are there in the class? ओके, सो अगर हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, सो क्या मिलेगा मुझे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्लास मेरे को निकालना है. ओके, दैट मीन्स total number of person in class, okay, is equal to rank of the person from upper end or left end. अब यहाँ पे बोल रहा है the boy is from 13th from the left hand side, that means मेरा ये वाला पार्ट हो गया 13, okay, and then 13 from the right hand side also, that means plus 13 करेंगे and then minus 1. So मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 26 minus 1 which is equal to 25. So option number C would be the correct answer, that is 25. बहुत ही सिंपल था. यहाँ पे मेरे को आई हैव डोंट हैव टू कि एक क्लास बना रहे हैं, क्लास के अंदर 1 2 3 4 करके 13 तक लिख रहे हैं, 13th पे वो बॉय है, नथिंग लाइक दैट. Just follow this particular, I can call it as Ramban formula to solve any kind of ranking questions. ठीक है? Anyone who didn't understood or it was difficult to understand या फिर formula समझ नहीं आया? Anyone? Okay, still I am getting different answers from Humaira and Vedant, that is 36 34. 36 34 correct answer नहीं होगा, इस option number 3 correct answer होगा, that is 25. Why? Because the boy is in the 13th position from left and right, दोनों में से 13th position पे हो. That means 13 plus 13 हम ऐड कर रहे हैं according to the formula, और उसमें से हम -1 अगर कर रहे हैं तो मेरा total number of students in the class will be equal to 25. Okay, now next question. तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है P and Q are ranked 6th and 10th. now ये दोनों को मार्क कर लेते हैं, एक 6th नंबर पे है, एक 10th नंबर पे है, P and Q. okay, respectively from top in the class of 30 students. that means यहाँ पे मुझे क्या दे दिया है? we have total number of students. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है ऑलरेडी. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम द लोअर राइट हैंड, लोअर या फिर राइट, ठीक है, प्लस रैंक ऑफ अपर या फिर लेफ्ट था, ये मेरा फॉर्मूला है. ठीक, -1. बट यहां पे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑलरेडी गिवन. सो इसको क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इफ इट इज गिवन टू मी and it is telling what are the respective ranks from the bottom in the class. bottom से P and Q का respective rank क्या होगा? so I have to find out this one, that means lower यानी bottom. so अब हम क्या करेंगे? total number of students, ये 1 को अगर हम इस साइड ले आए तो this will be +1, right, and ये वाला माइनस में चला जाएगा, that means rank from upper or left side. ये हो गया मेरा फॉर्मूला, विच विल बी इक्वल टू द रेस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम बॉटम इन द क्लास. ओके, सो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे पता है 30 दिया हुआ है, ठीक है, ये 30 दिया हुआ है. पी एन क्यू का रैंक भी पता है, एक का रैंक 6 है, एक का रैंक 10 है, राइट. सो अगर हम पहले पी के लिए निकालते हैं, इस फॉर्मूला में अगर हम डालते हैं पी के लिए इन दिस फॉर्मूला, राइट, सो पहला क्या आएगा? 30 माइनस फर्स्ट का रैंक क्या है? 6 +1, सो दिस इज 25. तो P का रैंक मुझे पता चल गया 25 होगा. सिमिलरली फॉर्मूला में अगर हम Q के लिए डालेंगे तो क्या होगा? 30 एंड देन यहां दिया है कि 10 है उसका रिस्पेक्टिव रैंक, दैट मीन्स 30 माइनस 10 +1, दैट मीन्स 21. So respective rank क्या हो जाएगा? 25 and 21 will be the respective rank. Okay? Easy था, बस
यू हैव टू प्ले विद द फॉर्मूला, कौन सा टर्म यूज किया गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला को सेट करना है उस हिसाब से. ओके, एनी क्वेश्चंस, एनीवन हु हैव एनी डाउट, या फिर फॉर्मूला वाज डिफिकल्ट है फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने के लिए, एनीवन? यस, नो, इजी था? चलो, so we have next question. इस क्वेश्चन में it is telling in a class of 32 students. ठीक है, so there are 32 students in a class. David rank is 6th from the bottom. ठीक है, so total number of student is 32. David rank is 6th from the bottom. What is the rank from the top? मतलब डेविड का रैंक अगर बॉटम से 6 है, so from the top what would be the rank of David? So guys, quickly tell me, ये फॉर्मूला को यूज करके what will be the answer? 32 मुझे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन in the class is 32. Okay, I have a quick answer from Shubha Sanchari, 27. Okay, any more answers? So इसमें अगर हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है 32 एंड देन द फर्स्ट पार्ट द रैंक ऑफ द पर्सन फ्रॉम अपर एंड, दैट मीन्स टॉप, राइट? सो मुझे टॉप निकालना है, दैट मीन्स दिस इज अननोन फ्रॉम मी, एंड ये फ्रॉम द लोअर एंड वी नो इट इज 6, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, इफ आई टेक इट एज आर विच इज नीड टू बी फाइंड इट आउट, सो 6 minus 1, अगर हम इसको इधर भेजते हैं 32 minus 6 plus 1. Okay, so my correct answer will be 27. बहुत ही सिंपल है, इस फॉर्मूला को यूज करके एनी काइंड ऑफ रैंकिंग क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व. कभी कभी रैंकिंग क्वेश्चंस बड़ा आता है, कभी कभी छोटा आता है, दैट मीन्स लेंथी क्वेश्चंस आल्सो कम. ठीक है, सो यू कैन इजीली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, एनी काइंड. जस्ट अगर क्वेश्चन का लेंथ बड़ा हो, सो यू हैव टू जस्ट कैच द इंपॉर्टेंट टर्म्स उस क्वेश्चन में, दैट्स इट. एंड आफ्टर दैट फॉर्मूला में पुट करो, इजिली निकाल लो. ठीक है, सो लास्ट इन दिस पर्टिकुलर सेशन, टुडे सेशन, टिप्स. ठीक है, रैंकिंग क्वेश्चंस के लिए कुछ टिप्स है. सो पोजीशन कैन बी फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रो एंड रैंक इज ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो ये हमेशा याद रखना है, रैंक हमेशा टॉप से बॉटम होता है, लेकिन जो पोजीशन होता है वो लेफ्ट या फिर राइट साइड से होता है. सो पोजीशन और रैंक, ये दोनों चीज क्वेश्चंस में पूछते हैं. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. रैंक अगर हुआ तो एकदम दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए दैट इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप. वहां पे लेफ्ट और राइट का कोई इश्यू ही नहीं है. ठीक है, बट व्हेन इट इज टेलिंग पोजीशन, सो वहां पे टॉप और बॉटम नहीं आना चाहिए, ओनली लेफ्ट एंड राइट शुड कम. ओके, दैट्स द फर्स्ट टिप. Second tip is the candidates can calculate the total number of person in a row or a column by using the formula. ये formula जो हमने पढ़ा अभी, total person, rank from left, from right minus 1. Okay, ये row के लिए है. Similarly यहाँ पे अगर class के लिए होगा तो left will be replaced by top and right will be replaced by bottom. ठीक है. Third tip is for non-overlapping type questions, the number of persons between two people. ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग टाइप क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सपोज 4 स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है. ओके, सो 2 स्टूडेंट किसी साइड पे बैठे हैं लेफ्ट साइड पे एक रो का, 2 स्टूडेंट राइट साइड पे बैठे हैं. सो उस टाइप का क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, विच इज if the number of persons between two people, दो लोगों के बीच में अगर एक पर्सन बैठा है, then the total number of person minus the sum of position of two different people from opposite side will be the number of person between two people. Okay, so ये formula जो है tip number 3, this is for questions जो overlapping type के आते हैं. that means like suppose एक रो में अगर 7 लोग बैठे हैं, सो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में अगर मान लो 2 लोग बैठे हैं, तो वो 2 लोगों का रैंक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. ओके, सो उस क्वेश्चन के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. राइट नाउ
फोर्थ टिप इज, थर्ड टिप था फॉर नॉन ओवरलैपिंग, फोर्थ है फॉर ओवरलैपिंग क्वेश्चंस, दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू पीपल. सो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन फ्रॉम अपोजिट एंड माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन -2. ओके. एंड द लास्ट टिप इज कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग. कैसे पता चलेगा अगर वो ओवरलैपिंग क्वेश्चन है कि नहीं? सो क्वेश्चन से पता चल जाएगा, द सम ऑफ पोजिशन ऑफ टू पर्सन फ्रॉम अपोजिट एंड शुड बी ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन. अगर दो लोग दिए हुए हैं, इफ देर आर टू पर्सन सपोज, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 50 क्लास में. ओके. सो अगर मान लो इसका पोजीशन 3 है और इसका पोजीशन 5 है, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं, दैट इज 8. सो 8 शुड बी ग्रेटर देन 50 विच इज नॉट. ठीक है. सो दिस इज नॉट एन ओवरलैपिंग क्वेश्चन. यहां से पता करेंगे कि ओवरलैपिंग है या नहीं है. सो उससे क्या पता चल जाएगा कि फॉर्मूला नंबर 3 यूज करना है कि 4 यूज करना है. ओके. So that was it for today's class. So these tips, if you keep in mind and solve as many questions related to ranking test, you will be easily able to fetch marks in this ranking test and sequential order type of questions. Okay. Any questions from anyone? Enjoyed this class? मजा आया? कहीं कुछ समझ नहीं आया? Anything? Yes? No? Okay, great. So, guys, we will meet up in our next session very soon and we will discuss the further topics as well. Okay, so till then, if you liked this particular class for today, do share it with your friends and with your your colleagues. छोटे जो लोग, जो बच्चे लोग हैं ना, जो who are preparing for their after 12 competitive exam, उनके लिए भी it is also very helpful. So do share it. It is not only for CSIR net exam, कोई भी competitive exam में आप बैठो, these kind of questions will surely fetch you good marks with these kind of formulas. Okay, so all the best, guys. We will meet up in our next class. Till then, thank you so much. Good night. Take care.